Hello everyone, I'm your Vishal Chabda. Welcome to my YouTube channel. Today we will start with our next topic of class 12th, meter bridge. So this is the practical example of Wheatstone bridge that we discussed in our previous video. So what is Wheatstone bridge? What is meter bridge? A meter bridge is a practical form of Wheatstone bridge to find the unknown resistance. Unknown resistance ਨੂੰ find ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਲਿੱਤੀ ਕਿਸ ਦੀ Wheatstone bridge ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ meter bridge. So meter bridge is a practical form of Wheatstone bridge to find the unknown resistance. So we will discuss with this the diagram. So firstly, here it is a copper strips fitted on a wooden board. The two copper strips and between this copper strip the long wire of consonant or magnet stretched between 2 points A and B. Here it is a meter scale to measure the length of wire. It is of 100 centimeter. Total length is 100 centimeter. So, and this wire is the A block or the A terminal is connected to positive end of the battery and the negative end is connected to other end of the battery. Here it is another copper strip to provide the two gaps. In these gaps there are two resistance. One is known and other is unknown. So suppose R is a known resistance, S is a unknown resistance. Here it is another point D which is connected to our galvanometer and other end of galvanometer is connected to jockey chain. So what is meter bridge? This is the full diagram of meter bridge. ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਕੀ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ नो डिफ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे जाके गैल्वेनोमीटर ने नो डिफ्लेक्शन शो करती उस पॉइंट पे जेड़ा अपना ब्रिज है वाला मीटर ब्रिज एक ही हो गया बैलेंस्ड हो गया। जिवें ਆਪਾਂ व्हीटस्टोन ब्रिज ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 4 रेजिस्टेंस ਲਏ ਸੀ ਆਪਾਂ। Similarly here 4 resistance P Q R S connected to battery and with this here is a galvanometer. Similarly from this there is a 4 resistance वायर का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होएगा। तो जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर पे की शो होएगी नो डिफ्लेक्शन उस पॉइंट तो पक्की ले लेंगे जी लेंथ ले लेंगे। सपोज AC, सो AC इज इक्वल्स टू L सेंटीमीटर। हाँ जी बाकी कितनी होएगी फिर CB 100 माइनस L सेंटीमीटर। सो रेजिस्टेंस भी होएगी। सपोज अपन कर लेते P रेजिस्टेंस है, Q रेजिस्टेंस है। If R is resistance per centimeter length, so P is equals to R. P is equals to RL and Q is equals to 100 minus L into R. So there are two resistance P and Q, RL and 100 minus RL.
सो जो ब्रिज अपना बैलेंस हो गया उस पॉइंट ते आपां की लै ली रीडिंग ले लीजिए अपनी एल डिस्टेंस आ गया मेजर करदा है स्केल तो बाकी जो नेक्स्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 100 माइनस एल हो जाएगा। सो डिस्कस करते हैं। सो फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज P upon Q is equals to R upon S. So put the value of P and Q in first equation. So P की value आ गई जी RL, Q की value आ गई 100 minus L into R and R upon S. R ना R cancel हो गए जी। Then R is equals to L upon 100 minus L into S. अगर R आप फाइंड करनी है, R जी अपनी अननोन रेजिस्टेंस है, S की है नॉन रेजिस्टेंस है, तो फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। और इफ वी हैव टू सपोज R अपनी नॉन रेजिस्टेंस है तो अपने को आ जाएगा 100 माइनस L इंटू आर अपॉन L। ये क्या आ जाएगी जी, फिर इतो अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये अपना फाइंड करने का मेथड है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। हाँ जी, नाउ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਰਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਐਰਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਕੇਲ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਜਾਂ 0 to 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 0 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰ ਹੈ और ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਐਰਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਰਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ after one reading we have to change the position of R and S after one reading. At every one reading, so we replace the position of R and S to overcome the error. So this is the meter bridge or slide wire bridge is a practical form of Wheatstone bridge. So our next topic is potentiometer. Potentiometer ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ potentiometer एक apparatus है, एक इंस्ट्रूमेंट है ਜਿਹੜਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟਲੀ। ਹੁਣ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੇਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਇਜ਼ more accurate than voltmeter to find the potential difference between two circuits, or also potentiometer is used to compare the EMFs of two cells. So what is potentiometer? It is an apparatus to find the potential difference between two points of electric circuit accurately, means to say बिल्कुल ही एक्यूरेट किसी वे नाल जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है तो उनकी किहड़ा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर दे नाल। हां जी, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ वर्किंग क्लियर कर लेने। पोटेंशियोमीटर की एक लॉन्ग वायर है ਜਿਹੜੀ कनेक्ट है ए और 2 पॉइंट्स P ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, 2 पॉइंट्स ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस S कोई स्केल है। समटाइम्स ਆਪਾਂ 4 ਵਾਇਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ फाइंड करते हैं। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ फाइंड कर ਲੈਣੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेने किसी भी सर्किट का, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का 2 पॉइंट के विचाले ए और बी, एक ही है कॉपर स्ट्रिप्स है जिन्हों किसी ने कनेक्ट किया गया जॉकी दे नाल, जॉकी ਨੂੰ ਆਪਾਂ वेरी करवाने किसी भी वायर ਦੇ पॉइंट ਤੇ। सो द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर and किस ਦੇ ਉੱਤੇ बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट fall of potential across any portion of wire, मतलब किसी भी पोर्शन ਦੇ ਵਾਇਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ पोटेंशियल डिफरेंस ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, fall होएगा, is directly proportional to किदे बराबर है जी, किदे directly proportional है, length of that portion of wire is of uniform area of cross section and constant current flowing through it. That means ਜਿਹੜੀ potential difference है वो डिपेंड किस ਤੇ कर रही है, वायर ਦੀ लेंथ ਤੇ जिस पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ करना है, potential difference ने फॉल करना है। सो प्रिंसिपल की दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप, द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फॉल एट दैट पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड इन यूनिफॉर्म करंट फ्लोइंग थ्रू इट और कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। हाँ जी, उन्होंने ऊपर डिस्कस करते हैं, छोटे ਜਿਹੇ एक्सप्रेशन है
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਰੋ ਆਪਣੀ resistivity, let V is potential difference of wire of length L and resistance की है जो थी R. So according to Ohm's law, V is equals to IR. And we know that R is equals to rho L upon A. Put the value of there. So I rho upon A into L. I rho A upon L. R the value पर से put कितनी है? So V is equals to KL, or V is directly proportional to length of wire, where K is potential gradient, where K is potential gradient. K is equals to V by L, that is fall of potential difference per unit length. मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट की है जी कि कितनी पोटेंशियल फॉल कर रही है किसी एक पोर्शन ऑफ द लेंथ ते तो उनको भी कहते हैं आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equals to IR, and from the factor affecting of resistance R is equals to rho L upon A. So put the value of R here. V is equals to I rho L by A, and V is equals to KL, where K is I rho by A, and it is a constant, or also known as potential gradient, and K is equals to V by L, that is fall of potential difference per unit length. So this is the potentiometer to find the potential difference accurately as compared to the voltmeter. So also it is also used to compare the EMF of two cells. So this is the last topic of our chapter, difference between potentiometer and voltmeter. ਹੁਣ दोनों ही ਜਿਹੜੇ ਹੈ वो measure करते हैं EMF, but potentiometer ज्यादा accurately measure करता है as compared to voltmeter. तो देखो जी, it measure the EMF of cell very accurately, it measure approximately. Next is EMF measure time. While measuring EMF, it does not draw any current from source of cell. मतलब cell तो कोई भी current draw नहीं करता, but while measuring EMF ये क्या करता है, कुछ small current draw करता है EMF तो. Next, while measuring EMF resistance ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ infinite in potentiometer, but in voltmeter it is high but finite ਹੁੰਦੀ है, infinite नहीं होएगी. Its sensitivity ਜਿਹੜੀ ਦੀ sensitivity ਹੈ ਬਹੁਤ high है, ਇਹਦੀ sensitivity बहुत low है, मतलब बहुत जल्दी है कि ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, but ਇਹ easily नहीं करता, sensitivity ਉਹਦੀ low है. It can be used for various purpose to find the potential difference between circuit, or also to compare the EMF of two cells, but it is used only for to find the potential difference. So हाँ जी, this is the last topic of our chapter. ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।